सबके दिल में ना एक सवाल रहता है हमेशा कि ये टाइम बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाए। टाइम बैलेंसिंग का मतलब ये हो गया कि लाइक हाउ टू गिव स्ट्रेस ओवर बोर्ड्स, लाइक हाउ टू गिव स्ट्रेस ओवर एंट्रेंस एग्जाम्स, हाउ टू गिव स्ट्रेस ओवर ओलंपियाड एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। इसी रीजन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर नाउ द एग्जाम इज नियर बाय, any kind of exam is nearby, how to prepare for the same, we are not able to manage the time and all these things। and उसी पर्पस के लिए आज मैं मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइक एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट को आई हैड ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। दिस स्टूडेंट actually I had taught him and he was with me since his 9th standard itself if I'm not wrong। and हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए हम लोग मिले थे एंड हम लोग उसको ट्रेन करते थे बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए। ही वाज अ वेरी इंक्यूजिटिव किड एज वेल एज अ वेरी स्मार्ट गाय आई वुड से। एंड हमेशा ही एक रिसर्च की और इसका एक माइंड था एंड मेडिकल का बहुत ही अच्छा एक कंटेस्टेंट था ये। एंड इसी जील की वजह से एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क की वजह से दी स्टूडेंट ही वाज एबल टू क्लियर नीट in with a very high score। He was able to clear in the same year AIIMS also with a very good rank, along with JIPMER also with a very good rank। I am talking about a student of mine whose name is Mr NILAY Agrawal, who is today here with us in order to share his own experiences and to have a chit chat with me in that case for like discussing that how he used to manage all his times and everything। Most importantly, इसने सिर्फ नीट जिपमर और एम्स को ही क्लियर नहीं किया था। दिस स्टूडेंट ही हैड गिवन हिज बेस्ट इन केवीपीवाई एग्जाम्स आल्सो। एक्चुअली ही वाज प्रिपेयरिंग हिज बेस्ट इन बायो फॉर बायो ओलंपियाड्स आल्सो, बट ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा ये बिजी हो गया था कि बेचारा उतना ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाया। सो ही गॉट completely shifted towards that of the KVPY। He was an outstanding scholar of that of the KVPY, and because of all this thing, no, I'll not say it in my like in my words only, I'll ask Mr NILAY, he is over here only, to just share all the achievements with you on। let me introduce, let me welcome NILAY। NILAY मेरा एक मैं इतना बोलूंगा कि NILAY मेरा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, बहुत ही मतलब मैं अभी भी जब भी किसी से बात करता हूँ तो इसका एग्जांपल सबसे पहले लेता हूँ। वेलकम NILAY टू माय शो, टू माय चैनल। हाय सर, वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत Thanks, टाइम बाद बेटा। आपसे ऐसे अच्छे से बात हो रही है। थैंक यू बेटा। तो देखो अब तो मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, अभी जितना मुझे बताना था मैंने बताया। अब मैं ये चाहूंगा कि बाय योर ओन वर्ड्स यू जस्ट शेयर योर अचीवमेंट्स, ओके, व्हाट यू हैड डन नाउ, वेयर यू आर स्टडीइंग एंड व्हाई यू आर स्टडीइंग, वो हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तुम एक बार अपने अचीवमेंट्स के बारे में शेयर करो। मेरे अचीवमेंट्स मतलब सर आपने कवर कर ही दिए। सो आई एम निलय, आई एम currently a third year undergraduate student at the Indian Institute of Science, Bangalore. I am in a BS research course, which is the bachelor's course for pure sciences. And I had given my competitive exams in 2019. And I was a KVPY fellow in 2000 for KVPY 2017. And I am sorry to interrupt, don't say KVPY fellow, now you are the KVPY scholar। Okay, so the KVPY fellow / scholar from KVPY 2017. I gave it in class 11 and I was able to secure admission into ISC with a rank of 65 in that particular exam, and that is the route I've taken to be here। ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया। तो यार मुझे एक चीज ये बताओ कि व्हाट हैड इन्फ्लुएंस्ड यू टू गो इनटू दिस रिसर्च फील्ड, बिकॉज आई नो यू पर्सनली। तुम जितना मतलब यू आर आउटस्टैंडिंग इन बोर्ड्स, बेटा तुम्हारा बोर्ड्स का परसेंटेज क्या था? बोर्ड्स का परसेंटेज यार दे थिंक 96.97% वैसा कुछ था, मुझे याद नहीं सर, सच्ची याद नहीं यार मतलब 96 मैं 10th से कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं। 96-97% तुम्हारा बोर्ड में था। अब तुम्हारा नीट 2019 का स्कोर बताओ। मुझे स्कोर आया था 656 आउट ऑफ 720। करेक्ट। एंड एम्स का तुम्हारा रैंक बताओ। एम्स का रैंक था 211। वेरी गुड। एंड जिपमर का रैंक बताओ। जिपमर में रैंक था 144।
दैट्स द थिंग, यही तो चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ यार कि मतलब तुम्हारा मेडिकल में यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। तुमने मुझे मुझे अभी भी एक चीज याद है, तुमने मुझे बोला था कि सर अगर मुझे एम्स दिल्ली मिलता है आई विल गो टू एम्स एंड गो आई विल गो टू द मेडिकल फील्ड इटसेल्फ, और अगर मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है देन आई विल शिफ्ट माय सेल्फ टू द रिसर्च, इजंट इट? Huh. Um, and that is also not because of like, it was not so much shifting to research. My plan was to still pursue research. Why I wanted to go to AIIMS Delhi is because AIIMS Delhi it's a wonderful institution, and obviously वहाँ पे education और resources एकदम top quality है. लेकिन AIIMS Delhi में आप MBBS के बाद they have an applied research program. You can do an MD PhD kind of thing there, which is what I was really excited about, saying that, this is one possibility I would love to explore if because it's also in biology and it's applied research. So that would have been wonderful. But I fell short, and I am in the best research institution or the best medical institution. And I am still able to pursue what I'm really interested towards. And I've been able to explore more like different fields within pure sciences that might not have been possible for me to explore had I gone to AIIMS, so had that thing happened. So looking back, I'm quite happy the way things turned out. But हाँ, मेरा मन हरदम से research में ही था. It was never about going into MS or something like that. तो मतलब तुम्हारा क्या बचपन से तुम्हारा ऐसा फील्ड था कि मुझे मतलब रिसर्च भी जाना है, या ऐसा कुछ, या फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट होना है, या ऐसा कुछ? बचपन से तो नहीं था, और वो तो हर बच्चे की तरह, मतलब मुझे भी एज आई ग्रो अप मुझे पता चला कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है. हर साल कुछ अलग बनने का वो एम्बिशन रहता था, एटलीस्ट क्लास 9. लेकिन क्लास 9 में आके, जैसे आपने कहा था, मैंने ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम पे, और that is when I started reading these textbooks जो which are not NCERT textbooks, in the sense जो generally you read to go deeper into topics. जैसे कि मुझे याद है आपके साथ मैं एक बार मैं कैम्बल लेके बैठा था, तब मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी वो बुक. और वो उस तरह की जो बुक्स थी ना, उसमें वो बहुत अलग पर्सपेक्टिव देते हैं टॉपिक्स को. NCERT इंफॉर्मेशन देता है, तो वो बुक्स एक पूरा आइडिया क्रिएट करवाते कि ये स्टार्टिंग था उसका. उनने फिर पूरा काफी मेथोडिकल होती है वो बुक्स, और मतलब काफी ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करते हैं. तो वहां पे आई थिंक वेल प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओलंपियाड मेरा थोड़ा सा रिसर्च की तरफ इंटरेस्ट टिल्ट होना स्टार्ट किया. और देन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ इन क्लास 9 में स्कूल से there was a competition called Brain Beam, and I had appeared from that on behalf of my school, and I won the regional round, and I was able to go to the national round. And the national round was it was a kind of a training camp which had students from the 12, one student each from the 12 regions around the country, and they had training programs and all sorts of stuff like that, with all perspectives, right? Research, diagnostics, anatomy, medicine, all of that. And I think that is the other thing that really tilted me towards this whole aspect of research. So I think वो 9th में ये दो चीजें हुई थी, उससे मेरा वो एक interest start हुआ, and that kept building up over the next 4 years. ग्रेट. मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जब बैठते थे, तुमको याद है जब हम लोग एज यू टेकन दैट एग्जांपल ऑफ दैट कैम्बल वन, यार हम लोग एक एक क्वेश्चंस को लेके बैठते थे, और जब तक वो क्वेश्चंस होता नहीं था तब तक तुम उठते नहीं थे वहां से, है ना? वो क्वेश्चन भी काफी अच्छे होते थे, मतलब वो बुक के पीछे वाले, बस समझ में नहीं आते थे सीधा देख के, और एकदम मजा आ जाता था वो सब कुछ में. और हमेशा तुम्हारे दिमाग में वो एक हमेशा सवाल चलता था कि सर ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस तरीके का चीज. तो अभी मुझे एक चीज ये बताओ कि जब तुम्हारा 2019 में तुम जब नीट, जिपमर एटसेट्रा ये सब जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे, उस टाइम पे तुम्हारे सामने में बोर्ड्स भी था, तो इन दोनों चीजों को तुमने बोर्ड में भी इतना अच्छा स्कोर तुमने लिया, एंड अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैड स्कोर्ड वेरी वेल इन जेईई मेंस आल्सो, इजंट इट? उस ईयर में जेईई मेंस में भी तुमने अच्छा स्कोरिंग लाया था. मेरा रैंक डिसेंट था, सो आई डोंट रिमेंबर माय
My percentile was, I think, 99.53. yes, So right. it's मतलब being a non-engineering, being a non-technical guy जो कि PCB की ओर ज्यादा oriented है, yet you were able to score such kind of good percentile. मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि तुमने कभी जेईई हाँ मेंस हाँ का प्रिपरेशन लिया हाँ, नहीं है. मतलब अलग तो से नहीं की मतलब थी. तुम हाँ. बैलेंस कैसे करते थे? यस, तुम बैलेंस कैसे करते तुम, बैलेंस की बात हाउ बस. यू आर एबल टू हाँ. अचीव? So I think that is one of the things that worked in my favor because I went to a CBSE school in my 11th 12th. So I was in the same school like from pre-nursery to 12th, and it was CBSE school. So I think that is one thing that worked in my favor because boards के लिए भी ultimately you're reading NCERT for at least of physics, chemistry, and bio, right? And that is the same thing. That is the core of what we built, or I built my whole preparation for these medical entrances amongst. So that was not a problem. And the only subject I had to really take time out and put in the effort was for maths. Because maths was not something I was doing uh, for the competitive examinations. Math I was doing simply because you know I love math and I wanted to keep pursuing it forward. Even today I'm taking math courses, and so that is only where place where I had to put in a bit of extra effort. And when you have to एक सब्जेक्ट है, उतना डिफिकल्ट नहीं है वो उस टाइम स्पेंड करना when you are preparing for your boards. And I also like was consistently working on math throughout those 2 years. It's not like I left everything for the end. So it was not even like मैं पहली बार चीजें पढ़ रहा हूँ. It was just like revising what you've already done over the past 2 years and just applying that. That's how even that's how also I think मैं JEE में rank decent था क्योंकि मैंने since math पढ़ी थी. I was not on level with those who have prepared for it for 2 years, but I had a very good grasp of what the basic fundamentals were or the basic concepts were, and I was able to use them to some extent. ग्रेट बेटा, ग्रेट. मतलब मैं हमेशा अभी जब भी अभी सोचता हूँ ना, अभी भी मतलब वो मुझे हमेशा वो एक ज़ील तुम में हमेशा अभी इवन अभी भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, वो एक ज़ील मुझे अभी भी दिखता है. यू आर ऑलवेज लाइक बबलिंग विद दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी. अभी भी मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब बैठते थे उस टाइम पे, तो लाइक हमेशा उस टाइम पे तुम जैसे थे अभी भी वैसे ही हो. मतलब देयर इज नो सच चेंज कि यार मैं अभी मतलब रिसर्च में हूँ एंड ऐसा कुछ है. नॉट लाइक दैट यार, लाइक the same thing I'm looking, and I'm proud of you because of that one beta. I'm really proud of you because of this thing. Very good. तो अगर मान लेते हैं अभी तो तुमको भी मालूम है नीट वगैरह आ चुका है, एग्जाम आ चुका है इस बार. ये जो पैंडेमिक्स वगैरह सिचुएशन की वजह से यू नो वेरी वेल कि जो लाइक बहुत स्टूडेंट्स डीमोटिवेशन एक स्टेट में चले गए हैं कि पिछले साल भी एग्जाम बहुत लेट हुआ था. सिर्फ नीट नहीं, कोई भी एग्जाम, बोर्ड्स की ये हालत है, एनी काइंड ऑफ एग्जाम. सो लाइक एनी काइंड ऑफ मैसेज you want to share for all the students for any kind of exams whoever are prepared? Yes, sir. I mean, it's not so much of a message, but I understand the कि क्या problems हो रही है. And honestly, between us, sir, अगर मैं सिचुएशन में होता ना कि मैं इतनी मेहनत किया हूँ 4 साल और फिर मैं आ रहा है पता एग्जाम आ रहा है फिर डिले हो गया, तो वो मतलब इट्स नॉट वेरी गुड. वो जितना वो मोटिवेशन बिल्डअप होता है वो ड्रेन आउट होना चालू हो जाता है. तो आई थिंक द ओनली थिंग आई वुड से इज दैट अभी तो बस हो गया, सितंबर में आ ही रहा है एग्जाम, तो बस इट्स दैट लास्ट 1 मंथ का स्ट्रेच. आई थिंक इम्पोर्टेंट बस ये कि बस एक 1 मंथ खुद को मोटिवेटेड रखना है बाय व्हाटएवर मीन्स नेसेसरी, एंड दैट्स ऑल. क्योंकि देयर आर वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स. किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और लेकिन जो है सो है, एंड वी हैव टू डू द बेस्ट विद व्हाट वी हैव. करेक्ट, करेक्ट. अदरवाइज मतलब अगर अभी हम लोग अगर डीमोटिवेटेड स्टेट में या नेगेटिव स्टेट में ज्यादा सोचेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट? और अभी तो इट्स द वर्स्ट टाइम टू बी इन दैट स्टेट. यस, यस. 4 महीने पहले ठीक था बिकॉज 4 महीने पहले यू हैड 5 months टू डू इट. अभी तो एक Correct. महीना बचा है. Correct. So right now is the worst time you could possibly be Correct. in a Correct. demotivated state. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. और लाइक अगर कोई स्टूडेंट जो नया अपीयर होने वाला है लाइक इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, जेईई मेंस लाइक और एनी काइंड ऑफ एग्जाम, उनके लिए तुम कोई मैसेज देना चाहते हो कि मान लेते हैं अगर उनको मेडिकल फील्ड नहीं मिला, ओके, तो इफ लाइक वो लोग सोचेंगे ना, बहुत ऐसा तुम्हारे मतलब तुमने भी सोचा होगा, तुम्हारे भी पीयर ग्रुप्स ऐसे रहे होंगे कि यार हमें मेडिकल फील्ड नहीं मिल रहा है तो लाइफ ही हेल हो गया है,
यार हमें जेई में अच्छा स्कोर नहीं आया तो लाइफ ही हेल हो हाँ, गया, देयर इज नथिंग लाइक दैट इन दैट केस। तो नहीं, अगर तुम मुश्किल there's absolutely nothing like that. And at the end of the day, it's like, and this is something that, this is something that I've heard from not only teachers like yourself, but also so many other senior people I've spoken to, professors here at ISC, my parents, my other very senior people I've met. They've all told me one thing. It's like, it's not the place you go to that really defines you. It's करेक्ट what you want to do with what you have. करेक्ट So it's not like, and I'm just taking an example here, but it's not like कि AIIMS Delhi में जो 50 लोग गए हैं, they'll राइट become the 50 highest paid doctors in the country. वेरी That करेक्ट will not happen. वेरी In करेक्ट fact, India में जो सबसे well known doctors है, मैं उनका नाम भूल गया. So I forgot his name, but I once met this person, this cardiologist, very senior ओके cardiologist. ओके He had done the first transplant in India, the Okay. first heart transplant in India. He Okay. is not from AIIMS. That's the thing. So it's no, you're not saying that unless you go to the top 5 medical colleges, it ends there. Right. What really makes a difference is what you do with what you have. Correct. Correct. And so if you suppose don't get into medical school, then you have two options. Either you look for your other options and figure out, what is the best you can do with what you have. Right. Or you drop a year, work harder, and then get into medical school. That's the thing. That's the thing. And Yeah. the thing is that because why I'm asking you this question, because you're a live example. You're a live example because you got so much good scores in both the engineering and the medical field itself, yet you had quit that field and you are going into that of your passion, like in research field itself. So मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उनका ये obviously अगर कोई भी स्टूडेंट जब PCM या PCB लेता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही रहता है कि I will become like a very good engineer or a very good doctor, but obviously they are the coveted course in our country. बट अगर वो कोर्स में अगर तुमको अच्छा स्कोर नहीं मिला तो दैट डजंट मीन दैट द लाइफ इज गेटिंग एंडेड एट दैट पॉइंट इटसेल्फ, हाँ, isn't it? बिल्कुल भी नहीं. Obviously. It's a start. In fact, It's a start, I'll right? say, like, and this is also another notion that I had, but again, over time and with people's appeal, it's not true. वो ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं कि बस 4 साल मेहनत करनी है, एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया, then we are set. ऐसा थोड़ी होता है. I'm working harder here than I worked in the 4 years, because now it's even harder for me to set myself up for a good grad school and then going forward. So it never ends. It's always harder than what it earlier was. Correct. And like obviously as the life will be like whoever will be taking, like we had seen a lot of people also like who are doing engineering, who are doing very good things from that of the engineering colleges, but they are not able to do anything very good in their life. Right. And we had seen many such kind of candidates also who are like passing out from such like a similar kind of like a low kind of college, which is considered as a low in the like public point of view, but they are doing outstanding in that of them. Yeah, exactly. Obviously, that's the thing. It doesn't define who you are, the college you go to. Right, that's the thing. And moreover, like a simple mere exam cannot define the life of or the fate of that of the student. Exactly. Yeah. Very fine. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. इसीलिए मैंने तुमको आज लाया, इसीलिए मैंने तुमको इनवाइट किया, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम अपने शो में आओ और तुम्हारे ये जो वर्ड है ना, और स्पेशली ये जो मुस्कान से तुम हमेशा बोलते रहते हो ना यार, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी मतलब किसी में भी वो स्पार्क को लेके आ सकता है. एंड दैट थिंग, दैट एटीट्यूड, लाइक मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ यार, like you give your best in whatever the thing you are preparing for, whether it's JEE mains, whether it's medical entrance exam, whether it's board, whether it's olympiads, whether it's any kind of exam is there or any kind of challenges are coming in front of you, you give your best. अब उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा ना, अब अपने बेस्ट के लिए तैयार करो. That's the thing, isn't it बेटा? बिल्कुल. Very fine. मतलब यही है, just you put in the work and the results will be there. That's the thing. I never worry about the results. Just पूरी मेहनत करनी है अपने साइड से, और कुछ नहीं चाहिए. बस पूरी मेहनत करते जाओ और सही तरीके से मेहनत करते जाओ. ऐसा नहीं कि यार मतलब मेहनत कर रहे हो बट हाँ वो मेहनत में क्या हो जा रहा है, 12 घंटा पढ़ रहे हो बट उसमें से 8 घंटा जो है वो मोबाइल में या सोशल मीडिया में बैठते हो. That is not the thing. पढ़ाई थोड़ी हुई सर, फोकस्ड
फोकस काम Right. करना होता है। अगर करेक्ट करेक्ट 12 घंटे नहीं कर सकते तो 8 घंटा करो, लेकिन फोकस करो जो भाई, भी कोई कर रहे हो। जरूरत ही नहीं है 12 घंटे का। मुझे तो ये अभी भी इतना भी याद है, जब नहीं हम जरूरत लोग है। जब बैठते थे, तुम जस्ट लाइक 2 घंटा 3 घंटा तुम मैक्सिमम पढ़ते थे, इजंट इट? और बाकी का टाइम तो स्कूल के काम में ही बिजी रहते थे पूरा। नहीं मतलब जितने मेरा तो ज्यादा। शेड्यूल ऐसा था, सुबह उठो, स्कूल जाओ, वापस आता था मैं यस। करीब करीब आई यूज्ड टू कम बैक एट अराउंड 1 o'clock or 1:15. करेक्ट I would eat lunch करेक्ट and I would come to Allen at around 2 or 3, depending on class थी या नहीं. राइट And फिर classes would start at about 4. We would stay here till 8:45. करेक्ट। घर जाओ, डिनर करो, थोड़ा टाइम पास करो, एंड देन रात को 2-3 घंटा मिलता था बस ऑन नॉर्मल वीकडे, यही बस था. बस दैट्स द थिंग मतलब ये शेड्यूल ही अपना ऐसा ही था। और हम लोग जिस तरीके से हम लोग मिलके बैठते थे, हम हमेशा मतलब आई हैड ऑलवेज सीन दैट कि मतलब तुम्हारे में वो इंक्लूसिवनेस की वजह से ही शायद तुम आज मेरे इतने क्लोज हो या मैं तुम्हारे इतना क्लोज। इन दैट केस आई थिंक सो एज सच मतलब वो एक हो नहीं, जाता है, दैट्स अ आप बॉन्डिंग। हाँ मतलब आपके साथ काफी टाइम से पढ़ता भी आ रहा हूँ ना. आपने मुझे 9 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो फिर कोई टीचर 4 साल तक आपके मतलब मैं किसी टीचर के साथ 4 साल तक पढ़ रहा हूं, तो वो बॉन्डिंग तो जनरेट होती है. यार वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है यार, मतलब लाइक एंड आई हैड सीन दैट रिजल्ट इन यू ना बेटा। और जब किसी स्टूडेंट पे अगर मैं देखता हूँ या कोई भी टीचर अगर देखता है कि यार वो स्टूडेंट वो लाइक वो स्पार्क है, वो देने वाला है, तो ऑब्वियसली वो कोई भी वो मतलब सारी जिंदगी वो कनेक्शन मेंटेन होकर रहता है। और मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ, आपको मालूम ही है कि स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा मतलब सारी जिंदगी हाँ कनेक्शन में सर. रहता और सर आप तो खुद भी रिसर्च से बैकग्राउंड है। से हो, तो मतलब राइट मेरे लिए तो वो और एक बोनस पॉइंट था कि करेक्ट करेक्ट मतलब आप आपके पास एक्सपीरियंस था उस फील्ड का. राइट। चलिए. So beta, very nice beta. Thank you very much. Thank you very much for coming over here and to share your experiences and everything, and to like to share those valuable words जो हम लोग हमेशा बोलते हैं for our all our like students and the for future appearing people itself in that case. Thank you very much beta. Problem, sir. I'm very happy to help out And any. all the best. Best of luck for Thank your you. future, whatever the exam you are preparing for. And like in any scenario, if you need my support, I'm always there. Yes, Like sir. always there for my Absolutely. Nila itself in that case. You know very well in that Yes, sir. Absolutely. case. Thank you very much. Thank you everybody whoever are seeing. So एक चीज हमेशा याद रखो, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है योर ओन बैलेंसिंग ऑफ एवरीथिंग। टाइम को जैसे बैलेंस करना होता है, ठीक उसी तरीके से चाहे कोई भी चैलेंजेस तुम्हारे सामने में आए, उनको भी बैलेंस करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर तरीका ये हो जाता है कि जस्ट बी प्रैक्टिकल। If you are practical enough, if you are professional enough, and you know that I have to finish this much of work in this much amount of time, you are able to juggle anything in between any point of time. Thank you everybody. Thank you very much.